Welcome to WeLearn. This is session number 5 of Multimedia Computing. In this session, we are going to cover following topics. The main topic of the session is multimedia compression techniques and standards, and the subtopics are data compression, storage space and compression requirements, source, entropy and hybrid coding, major steps in data compression, and some basic compression techniques. The first topic is data compression. The data compression is very important for multimedia application as uncompressed graphics, audio and video data requires considerable storage capacity. Compressing a data file reduces its size and hence it can be easily transformed over digital network. The amount of compression depends on the compression method and the compression rate. We normally use compression and coding because these are just synonym in term of data compression if we are dealing in multimedia. तो जब हम डाटा को कंप्रेस कर देते हैं और नॉर्मली हमें करना भी चाहिए अगर हम मल्टीमीडिया में वर्क कर रहे हैं बिकॉज मल्टीमीडिया कंटेन्स मैनी मीडिया in one go like audio, video, text, all of them are inside multimedia. So if we compress our data, then it will take a low size and covers a low storage space also. Multimedia applications make use of various components like your text, graphics, arts, animations and videos, and all of them are stored in files and it contains binary number 0 and 1. That's why we need to compress them. Now, there are many compression techniques for multimedia information. They can be classified in many ways according to different criteria. Like some classification is based on the compression algorithms which are used in the compression techniques. Another one is classify them based on the results of the compression techniques. If the original data can be reconstructed exactly after using compression techniques, we call this compression technique lossless, otherwise it is lossy. अगर हमारा डाटा किसी भी रिस्पेक्ट में डैमेज होता है या फिर हमें क्वालिटी डाटा नहीं मिलता कंप्रेशन के बाद तो हम कहते हैं ये एक लॉसी कंप्रेशन है. ऑन द अदर हैंड इफ़ वी गेट अ क्वालिटी डाटा देन इट बिकम्स अ लॉसलेस. As far as lossless compression techniques are dealt, they are normally used for compressing computer programs and legal and medical documents. The compression ratio achievable is normally very low. Lossy compression techniques are normally used for compressing digital audio, images, video in most of the multimedia applications where some errors or loss can be tolerated. They use both data statics and human perception properties. They can produce very high compression ratio as compared to your lossless compression techniques. Now, storage space requirement for this. There are some specifications which give you an idea about how much storage space is required for a particular file. And these specifications contains first is for the presentation of text. 2 bytes are used for each character and each character is displayed using 8x8 pixels. On the other hand, for the representation of vector graphics, a typical still image composed of 500 lines in which each line is defined by the horizontal position, vertical position and moreover an 8-bit attribute field. The horizontal axis is represented using 10 bits and the vertical axis is coded using 9 bits. Then, in very simple color display mode, a simple pixel of a bitmap can be represented by 250 different colors. And uncompressed audio signals of telephone quality is just sampled at 8 kHz and quantized with 8 bits per sample. And lastly, an uncompressed audio signal of telephone quality is just sampled at 8 kHz and quantized by 8 bits per sample. Normally, these are used, or we can say that these are the specifications which helps us to find what is storage space needed by a particular file. Now, compression requirement for your multimedia files. Compression in multimedia is subject to certain constraints, and these constraints are the quality of the coded and later on the decoded data should be as good as possible. Secondly, to make a cost-effective implementation possible,
Then the complexity of the technique used should be minimal. And lastly, the processing of the algorithm must not exceed certain time span. वो time span जो उसे provide किया जाता है compression करने के लिए, उस particular algorithm को उससे exceed नहीं करना चाहिए. For each compression techniques, there are certain requirements that differ from those of other compression techniques. One can distinguish between requirements of an application running in a dialogue mode and another one is your retrieval mode. A dialogue mode means an interaction among the human users via multimedia information, and a retrieval mode means a retrieval of multimedia information by a human user from a multimedia database. Now, first of all, in a dialogue mode application, the following requirements are needed. Based on human perception characteristics must be considered. Secondly, the end-to-end delay should not exceed 150 milliseconds. That is for compression and decompression both. A delay in range of 50 milliseconds should be achieved to support face-to-face dialogue applications. अगर आप डायलॉग एप्लीकेशंस में डील कर रहे हैं तो 150 मिली सेकेंड से ज़्यादा डिले अप्रूवल नहीं होता अगर आपने कंप्रेशन या डिकम्प्रेशन में उससे ज़्यादा टाइम लिया है. मोरोवर अगर आप 50 मिली सेकेंड का भी डिले कर देते हैं तो उसको भी हमें ओवरकम करना होता है फेस टू फेस डायलॉग एप्लीकेशंस में. नाउ इन अ रिट्रीवल मोड एप्लीकेशन the following demands arises. Firstly, fast forward and backward data retrieval with simultaneously display. That should be possible. Secondly, random access to single images and audio frames of a data streams. And then the decompression of images, video, audio should be possible without a link to other data units. So these are some demands which are associated with retrieval mode of application, in which we just need the information. Means we want the information in the form of multimedia for our human user. Now, source and entropy coding. First of all, entropy compression. This particular compression is used regardless of media specification characteristics. The data stream is to be compressed, considered to be a simple digital sequence, and the semantic of the data is ignored. The entropy encoding is an example of lossless encoding, as the decompression techniques regenerates the data completely. अगर हमारे compression करने में जो डाटा है उसे मैं again decompress करती हूँ और वो सेम डाटा ही मुझे मिलता है जो compression करने से पहले था, तो that means आपकी वो पूरी प्रोसेस lossless है. Then is your source encoding, source coding. Source coding takes into account the semantic of data. The degree of compression that can be reached by source coding depends on data content. वो content जो आपके फाइल के अंदर कंटेंट है, सोर्स कोडिंग टोटली उस पर डिपेंड करती है. ये एक लॉसी प्रोसेस होती है. लाइक इन द केस ऑफ लॉसी कंप्रेशन टेक्निक्स, अ वन वे रिलेशन बिटवीन द ओरिजिनल डाटा एंड द एनकोडेड डाटा एग्जिस्ट. द डाटा स्ट्रीम्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. मिलती जुलती तो हैं पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होती. जो सिंपल आपकी इनिशियल फाइल थी और जो बाद में आपने एनकोडेड फाइल उसके बाद बनाई है, वो वाली. Then is your hybrid coding. First is your entropy, then source, and lastly is hybrid coding. Hybrid coding makes use of both the source and entropy. That's why we name it as hybrid. The particular examples of this are JPEG, MPEG, DVI. These are the examples of hybrid coding. Most of the compression techniques used in multimedia are hybrid techniques. Now, there are major steps in data compression. In all, we have 4 steps. The first step is data preparation. This step includes an analog to digital conversion and generates an appropriate representation of the information. An image to be compressed is divided into blocks of 8 x 8 pixels and represented by a fixed number of bits per pixel. This is also called picture preparation with respect to your image compression. पर्टिकुलरली इसमें हमें अपने एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है बाय जस्ट ब्रेकिंग दैम इन 8 x 8 पिक्सल ब्लॉक्स. देन नेक्स्ट स्टेज इज डाटा प्रोसेसिंग. डाटा प्रोसेसिंग इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस because it makes use of sophisticated algorithms for compression. A transformation from the time to the frequency domain can be performed using DCT. DCT is discrete cosine transformation.
इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क होता है आपको टाइम स्केल से फ्रीक्वेंसी डोमेन तक लेके जाना. In case of motion video compression, in-frames coding uses a motion vertex or vectors for each of 8x8 block of pixel. And then the third stage, quantization. In quantization process, the result obtained from the previous step, that is your data processing, it specifies how the real numbers are mapped into integers, and this particular process results in a reduction of precision due to truncation of real numbers. And the last stage is your entropy encoding. Entropy encoding आपका लास्ट स्टेप है कंप्रेशन प्रोसेस का. पर्टिकुलरली इसके अंदर हम जितने भी सीक्वेंस हमने रेज करी होती है, लाइक हमने इनिशियली ब्लॉक को ब्रेक किया, मीन्स एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया, देन उनको कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको सोर्स कोडिंग को ट्रांसफॉर्म किया, एंड आफ्टर दैट वी जनरेट एन इंटीजर इन क्वांटाइजेशन फेज. तो जो इंटीजर आपने जनरेट किया है एंट्रोपी एनकोडिंग के अंदर, हम उन इंटीजर्स को जो अलग अलग हैं जस्ट कंबाइन करके एक सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रीम बनाते हैं, और उसके बाद फाइनली आपके पास एक कंप्रेस्ड डाटा आ जाता है जिसे आप यूज़ करते हैं. पर्टिकुलरली हमने जिस मेथड को इस पूरी प्रोसेस में डिस्क्राइब किया है, इट जस्ट एन रन लेंथ कोडिंग, वन ऑफ द कंप्रेशन टेक्निक. नाउ we discuss compression techniques in detail. The first technique is your run length coding. Sampled image, audio, video data streams often obtain sequence of the same bytes. By just replacing these repeated byte sequence with a number of occurrence, a substantial reducing of a data can be achieved. We name this method as run length coding. इसमें हम जितने भी हमारे पास स्ट्रीम अवेलेबल होती है डाटा की, चाहे वो ऑडियो या वीडियोस डाटा स्ट्रीम से आई हो, हम उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को चेक करते हैं और जो भी एक जैसी है उसको इकट्ठा रख के उसको एक बाइट स्टफिंग के थ्रू रिप्लेस करते हैं. लाइक इस यहाँ पे हम एक यूज़ करेंगे फ्लैग बाइट. द फ्लैग बाइट इज़ जस्ट वन ऑफ देम अमंग 255 डिफरेंट बाइट्स. दैट इज़ जो हम जिसमें टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी एक बाइट स्टफिंग है. In this byte stuffing, we just define an exclamation marks as a special flag, or we can say this as flag byte. A single occurrence of this exclamation mark is interrupted as a single flag during compression, and two consecutive exclamation marks or flags are interpreted as an exclamation mark occurring within the data. If the byte occurs at least 4 consecutive, then the number of occurrences is counted. We can see an example, and here you can see the Z repeats 8 times. So we write Z and exclamatory marks and then 8. How many times the Z is repeated? The first one is uncompressed data and the second one is compressed data, in which we compress our data by using this byte stuffing. Then is your diatomic encoding. This is a variation of run length encoding which is based on combination of 2 bytes. In this technique determines the most frequently occurring pairs of bytes. According to an analysis, the most frequently occurring pairs are E, T, TH, A, S, RE. These are some pairs that frequently used in our English language. And in diatomic encoding, our more emphasis is on this particular phase. Means कौन कौन से कैरेक्टर्स हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बार यूज़ करते हैं और वो नॉर्मली पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ताकि हम उनको ही रिप्लेस करके एक एनकोड, जब हम उन्हें कंप्रेस कर रहे हैं तो एनकोडेड फॉर्म में हम अपने उस पर्टिकुलर पेयर को किसी पर्टिकुलर कोड के साथ चेंज कर दें. देन इज़ योर हफमान कोडिंग. इन दिस देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द वेज ऑफ एनकोडिंग डाटा, बट दिस पर्टिकुलर इज़ वेरी usable or a good compression method. This particular is used as compression method in digital imaging, video as well as in other areas. The idea behind Huffman coding is simply just to use the shorter bit pattern for more common characters and longer bit patterns for less common characters. For example, we can refer a pic. This is the example of Huffman coding. And in this example you can see at the end we are writing the probability. This means A आपका कितनी बार अकर्स हो रहा है या फिर हम उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कितनी probability, कितने चांसेस हैं उसको हमें रिड्यूस करने के. तो in this the characters with the lowest probability are combined in the first binary tree. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हर एक करेक्टर की इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या है. लाइक PA की एंडिंग प्रोबेबिलिटी हमें मिली 13, D की है 6.16,
ई की है 0.11 एंड सी इज़ 0.09। तो इसके अंदर सी और ई इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक सी ई पेयर बना दिया और उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.20। और ऑन द अदर हैंड ए और डी को कंबाइन करके ए डी बना दिया और उसकी होगी प्रोबेबिलिटी 0.29। एंड अगेन वी कंबाइन बोथ ऑफ देम एंड रेज अ डिफरेंट एलिमेंट लाइक सी ई ए डी, and then after we reached 0.49, which is just nearly to b, like b's probability is 0.51, and then we combined both of them and raised 1. And when we finished all this thing, we get an code related to every character, like for a we have 110, for b is just 0. ये 0 और 1 जो हमने अलग अलग ब्रांचेस पे मार्क किए हैं, ये डिपेंड करते हैं कि जो आपकी लोएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला, जो आप दो को कंबाइन कर रहे हो, उन दोनों में से जिसकी लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है उसकी ब्रांच पे आएगा 1 और जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है उसकी ब्रांच पे आएगा 0। और जब आप ये पूरा ट्री बना लेंगे, इट्स जस्ट लाइक अ बाइनरी ट्री, जिस एक के दो दो चाइल्ड्स होते हैं मैक्सिमम, वो ट्री बन गया है। और आपने जब इनको दोबारा से ट्रेस करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू गेट द डिजायर्ड नंबर लाइक 110 फॉर ए, 0 for B, 101 for E, and respectively for all. So this is an example of Huffman coding. Now next and compression technique is waveform coding. Waveform coding tries to encode the waveform itself in an efficient way. The signal is stored in such a way that upon decoding, the resulting signal will have the same general shapes as the original. This particular applies to audio signals because in there we have waves and we can apply waveform coding very efficiently on our audio signals. The simplest form of the simplest form of waveform coding is PCM, encoding the signal. But a signal can be further processed to produce the amount of storage needed for waveform, and the particular encoding which we are using in waveform coding is PCM, that is pulse code modulation. Then is your differential coding. Differential coding tries to exploit the fact that with the audio signals the value of one sample can be somewhat predicted by the values of previous samples. In this, we given a number of samples, the algorithm will calculate the prediction of the next sample, and then they will store the differences between the predictive and actual value and then gives rise to a encoded data. So normally हम previous samples के ऊपर depend करता है कि हमारी next sample की क्या value हुई, क्योंकि हम उसी पे ही predict करते हैं कि next sample भी हमें इतना ही कुछ nearly about values को provide करेगा. Now in differential coding there are few terms. First is differential PCM, or we simply call it as DPCM. It merely calculates the difference between the predictive and the actual value of PCM signals and uses a fixed number of bits to store their difference. And the number of bits used to store this difference determines the maximum slope that the signal can have if errors are to be avoided. Then next term is adaptive DPCM, or we normally call it them as ADPCM. This is an extension to DPCM. With this encoding method, there are still a fixed number of bits used to store the difference, in contrast to previous technique which is simply used for all the bits to store the difference. In this ADPCM, we uses some of the bits to encode a quantized level, and in this way the resolution of the difference can be adjusted. Then comes is delta modulation, or TM. With this method, only a bit is used to encode the difference, and one value that indicates an increase of predictive value with a certain amount, the other indicates a decrease. Then is your vector quantization. With vector quantization, the input is divided into equally sized pieces which are known as vector, and then essential to this type, the encoding is presence of a code book and array of vectors. For each vector of input, the closest match to a vector in the codebook is looked up, and this index of the codebook entry is then used to encode the input vector. And the last term is transform coding. When we consider PCM data, we are in fact looking at a signal in the time domain. With transform coding, the signal is transformed to its representation in another domain in which it can be compressed better than its original form. तो नॉर्मली जितने भी हमने ये
टर्म्स पढ़ी हैं, जस्ट ये भी एक एनकोडिंग स्कीम्स ही हैं जिसके अंदर हमने अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करी हैं अपनी वो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू के लिए। लाइक डिफरेंस को हम अगर डिफरेंशियल में शो कर रहे हैं तो हमें हर किसी के लिए अलग अलग टर्म्स कोड करनी है, एक बिट स्टोर करनी है। और अडेप्टिव के अंदर हमने वहीं उन्हें ग्रुप करके यूज़ करना शुरू कर दिया फिक्स नंबर ऑफ बिट्स के साथ। और उसके बाद डेल्टा के अंदर तो हमने एक बिट को यूज़ किया है एनकोड करने के लिए डिफरेंस। तो ये सारी आपकी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप डिफरेंशियल कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। नाउ डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लॉसलेस एंड लॉसी कंप्रेशन टेक्निक्स। आपको टेक्निक्स को डिफाइन करना है जो लॉसलेस और लॉसी होती हैं। सेकेंडली, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू बेसिक कंप्रेशन टेक्निक्स। इट कैन बी एनी हुफमैन कोडिंग, योर सोर्स, कोई भी ऐसी कंप्रेशन टेक्निक जो आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक इट कैन बी योर डिफरेंशियल एनकोडिंग, रन टाइम कोडिंग, हुफमैन कोडिंग, एनी टू। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग।